forums like Supreme Court of India. It's not necessary to get these rules implemented. Like we have rules like solid waste management rules 2016. For example, we have solid waste management rules 2016, wherein government has to implement, government has to ensure management of solid waste in municipal areas or non-municipal areas also. We have Swachh Bharat Gramin phase 2, wherein they have to undertake rural waste management program. Government is sort of so we have that law. Then we have law minor mineral concession rules 2016. Environmental impact assessment authority guidelines, environmental clearance guidelines. If those guidelines, those rules, those laws, those regulations are not being implemented on the ground, you can see judicial intervention. First, you have to seek information. When you have information with you, you can seek judicial intervention by way of filing a simple application before Secretary, District Legal Services Authority. In every district, we have these institutions which are headed by judicial officers. Judicial officer इनको head करते हैं. हर एक district में institutions हैं हमारे पास. Legal Services Authority, State Legal Services Authority, District Legal Services Authority, तहसील Legal Services Authority, तहसील level तक है आपके पास. वहाँ पे हम क्या करेंगे? Simple application filed before the Secretary, District Legal Services Authority, or the chairperson of तहसील Legal Services Authority, जो वहाँ पे subject है कोई या कोई मुंसिफ वहाँ पे जज साहब है, उनके पास आप एप्लीकेशन कर सकते हैं. That is called pre-litigative application. एक तो लिटिगेटिव होता है, डायरेक्टली आप एक अपील करते हैं, सूट करते हैं, बाकी चीजें करते हैं. These are called pre-litigative. Pre-litigative इसमें जाएंगे. लिटिगेशन से पहले ही आप एप्लीकेशन करेंगे. So pre-litigative में अगर आप करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से अथॉरिटी को बताएंगे कि मेरे एरिया में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उनको वेस्ट उठाना था गांव में. असले स्वच्छ की पंचायत हुए. असले वीडियो सोपन एक प्रोग्राम बनाऊंगा कि स्वच्छ भारत ग्रामीण फेज 2 सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन हर तरह की ही. वो देखोगे ना पहले स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 में क्या लिखा है, वो गूगल में सर्च करना क्या लिखा है, फिर बताऊंगा. So then, or you will seek judicial intervention by way of filing an application regarding illegal riverbed mining. जो illegal riverbed mining होता है, यूथ का रोल नहीं है ना. आपको क्या करना है? टॉपिक पर मैं बिल्कुल टॉपिक पे आ रहा हूँ. मुझे तो टॉपिक पर समझ नहीं आ रहा. तभी बात करते हैं क्या क्या रोल है आपका. You have to file RTI. You have to get information from the concerned agencies. RTI फाइल कैसे करना है वो आप गूगल में देखोगे और आप जो देखो यूट्यूब पे. Because now we are under Central Act. वो सेम है. How to file RTI application under RTI Act 2005. बस इतना देख लोगे. Then after filing RTI you will get information or you will not get information. You will file appeal. उस पे लिखा how to file first appeal, how to file second appeal, वो आ जाएगा. Once you have information with you or without even having information, even if you go to Secretary Legal Services Authority, ताचुन ज़रूरत था उनकी, सही कौन थे करे था. वंचुन ज़रूरत है तो सारी information. तभी से युति वन assessing कामों से सफाई गसानी. असनच तदच illegal mining चला. तेमोज JCB, तेमोज रागस करा, तेमोज आत्मोर मुतित कौन होता. तो है कि उसको RTI फाइल करे, तो है कि उसको पत्ता कंप्लेंट फाइल करे कहते डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी. These are the institutions. जब आप वहाँ पे भी फेल हो जाओगे, then as a community you can go to tribunal, National Green Tribunal. उसके बाद में लास्ट है वो. इतने आपके पास ये चीजें हैं. ठीक है. आप थोड़ा इससे आ जाइए, थोड़ा बैक इसको बैक ले लीजिए. ये देखिए रात को टाइम पीछे हो पीछे वो फोल्डर लाइए दूसरा वाला.